Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. The you can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, welcome to another session. So what we will study today. So in today's lecture we are going to continue with our last previous topics, that is online transactions.
So the contents till now which we have seen regarding online transaction, likewise we have seen the introduction about it, what is online transaction, हम लोगों ने इसके definitions भी देखी थी, and then what is the e-shopping क्या होती है, वो कैसे करनी है, वो भी हम लोगों ने देखा था, some of the steps to follow the e-shopping, and the next one is the points which we are going to discuss in today's lecture, that is e-ticketing and advantages of e-ticketing. So let's get started with today's point. So first of all, we will see what is e-ticketing. So e-ticketing refers to obtaining a ticket, that is nothing but the e-ticket, by online means. जी हाँ, हम लोग एक ऐसा टिकट ले सकते हैं, we can buy any ticket regarding your traveling or cinemas, whatever, some shows, dramas and so on. So यहाँ पर क्या कह सकते हैं, e-ticketing refers to obtaining a ticket, that is e-ticket by online means. So e-ticket क्या होता है, देखिए, an e-ticket or an electronic ticket is an electronic version of regular printed ticket. So हम लोग क्या कर के बोल सकते हैं, एक प्रिंटेड टिकट का जो होता है रेगुलर वर्जन ऑफ प्रिंटेड टिकट का सेम वर्जन आपको ऑनलाइन दिखेगा, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज नथिंग बट द ई टिकट. सो इट इज रिगार्डलेस बाय द एयर और बाय द ट्रेन टिकट. सो इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, ठीक है, ई टिकट क्या होता है आपको पता चला, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है आपके रेगुलर प्रिंटेड टिकट का. If you are going to book for something, whether you are going to book for the train, you are going to book for the aeroplane and so on, और अगर कोई मूवी होगी तो मूवी का, likewise. So electronic ticketing, that is e-ticketing, is the process of making e-tickets available without any need for the printed tickets. So e-ticketing देखिए क्या होता है, e-ticketing is the process of making the e-tickets available without any need for the printed tickets. So यहाँ पर क्या होगा, आपको printed tickets की भी जरूरत नहीं रहेगी, that is nothing but the e-ticketing. So now these days you can buy e-tickets to have the many facilities like watching movies, then watching theater plays, then traveling by air, watching matches, that is for example cricket match, baseball match, so on. Then attending some events, that is some live performances are there. If you are having some urgent meetings, you can travel by air, then for that also. Then attending events like some live concerts of some celebrities also, you can also book that e-ticket online. Then next one is traveling by train. So these are some of the facilities you can use for e-ticketing. Then traveling by bus, आजकल भी वो भी facilities e-ticketing में available है, like अगर आपको किसी मूवी का या थिएटर का प्ले का कोई बुक करना है तो बुक माई शो पे आप कर सकते हैं. देन इफ यू हैव टू बुक द ट्रैवलिंग टिकट फॉर बस, यू कैन यूज रेड बस आल्सो. ठीक है, आजकल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के भी बुक जो है टिकट बुकिंग जो है वो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, और व्हाट वी कैन कॉल इट एज द ऑनलाइन रिजर्वेशंस. सो the next question is, to buy an e-ticket you need to fulfill following two requirements. अगर आपको e-ticket जो है वो खरीदना है, that is if you want to buy an e-ticket you need to fulfill the two requirements. So first one is access to the internet. It means what, आपके पास internet connectivity होनी चाहिए. So this is another need, the first requirement of the internet, and the second requirement is online payment facility. So online payment facility हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, दैट इज विद इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर, दैट फैसिलिटेट्स द नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी जहाँ पर अवेलेबल होगी वहाँ पर भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी जो है वो यूज कर सकते हैं.
So now after booking the e-ticket, देखिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं. I will show you some steps. That is e-ticketing. Now after booking the e-tickets, that is what we can say, after fulfilling the requirements, one can book an e-ticket as follows. देखिए अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं. First one is log into a site that provides online booking system. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, bookmyshow.com. ये किसके लिए होता है, फॉर वॉचिंग द मूवीज, देन प्लेज, सम ड्रामास, देन मैचेस, मैच टिकट्स एंड शो ऑन. Then next example is cleartrip.com. Then .com. Then makemytrip.com. Then vinaworld.com. Then केसरी एंड ये सारे जो है फॉर ट्रैवल टिकट्स. And what we can say, for picnic also. Okay, travel trips, travel, इससे अच्छा हम लोग ट्रैवल टिकट्स एंड ट्रिप, उसमें दोनों भी इंक्लूड हो जाएगी. देन उसके साथ साथ हम लोग रेड बस भी जो है वो इसके कर सकते हैं, redbus.com फॉर बुकिंग बस ट्रैवल्स टिकट्स. उसके बाद ओला उबर जो है हम लोग वहाँ पर कार्स भी बुक कर सकते हैं, ओला उबर फॉर बुकिंग फोर व्हीलर्स. उसके साथ साथ अभी यहाँ पर ऑटो रिक्शास भी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ओला उबर फोर व्हीलर्स, देन अदर थिंग्स वैन सीटीसी ऑटो रिक्शास. ओके, लॉग इन कर लिया. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, you have to provide the details about the first one, day, then time, seating type and so on. ठीक है, आप लोगों ने डिटेल्स प्रोवाइड कर दे, जैसे कि डे, डेट, टाइम, कब जाना है, कहाँ पर जाना है, सीटिंग टाइप आपको कौन सा चाहिए. Likewise, now next the website will display the available choices. So make a choice and confirm by
सबमिटिंग योर डिटेल्स। सो आपकी चॉइस बना लीजिए एंड कंफर्म कर लीजिए बाय सबमिटिंग योर डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, द मोमेंट यू सबमिट, आप लोगों को सबमिट करने के बाद द डिटेल्स you entered get recorded in several computer databases and the ticket reservation is confirmed. The ticketing system has access to these databases. Okay, the website will display all available choices. Make a choice and submit your details. जब आप लोग आपका the moment you submit the details you entered, it get recorded in several computer databases. कंप्यूटर के databases में जो है वो पूरे रिकॉर्ड हो जाएंगे एंड द टिकट रिजर्वेशन इज कंफर्म। नाउ द टिकटिंग सिस्टम हैज एक्सेस टू दिस डेटाबेसेस। ठीक है, अभी बुक कर लिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ट्रांजैक्शन करना है ऑनलाइन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज मेक पेमेंट, मोस्टली ई पेमेंट as per the directions of the website। यहाँ पर मोस्टली क्यों कहा गया है, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट, दैट इज जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी करते हो शॉपिंग में, वैसे ही टिकटिंग में आप ऑन द स्पॉट जाकर, जब कभी भी आप ट्रैवलिंग को जाओगे तो वहां पर जाकर भी आप लोग अपने टिकट के पैसे जो है वो चुका सकते हैं। सो आफ्टर द ई पेमेंट is processed, the website will show the e-ticket on screen, which you can print or save. So after the e-payment is processed, the website will show the e-ticket on screen, which you can print or save. ठीक है, by following these some steps you can book your e-ticket, like log into the site that provides online booking systems. Then next one, what we can say, provide details about the date, time and sitting type and so on. Now the website will display the available choices, so make a choice and confirm by submitting your details. Then make payment, is mostly e-payment as per the directions of the website. Then after the e-payment is processed, the website will show you the e-ticket on the screen and you will save it, or you can print based on the your choice. So in this way online e-ticketing is done. Now we have seen how e-ticketing is done. The next point which we are going to discuss now is advantages of e-ticketing. E-ticketing के advantages क्या होते हैं? देखिए, the first advantage is its safety, then ease, then available anywhere, and lastly fast. So we will see this one by one. Advantages of
e-ticketing. ठीक है, the advantages offered by e-tickets over paper tickets are, okay, we will go for the one by one. First one is the safety. जी हाँ, while booking an e-ticket, you directly store your details in companies databases. So it is safe and obviously reliable to make any changes or cancellations or annotations, as all these take place inside the secure electronic databases. अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करने हैं या फिर आपको उसमें कुछ अनोटेशंस वगैरह ऐड करने हैं, लाइकवाइज कैंसलेशंस करने हैं, तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सेफली कंपनी की डेटाबेस में स्टोर रहेगी. Then next one is the eggs. So e-tickets can be purchased online and printed at home. So theft or loss of the printed e-ticket is not a worry. So it can easily be retrieved and reprinted. Okay, that is its age of use. Then third one is it is available anywhere. So buying an e-ticket is simpler and fast. One can buy e-ticket anywhere where there is an internet connection. Then next one is fast. देखिए, बाइंग एन ई टिकट इज सिंपल एंड फास्टर. वन कैन बाय ई टिकट एनीवेयर वेयर देयर इज इंटरनेट कनेक्शन. आप घर बैठे भी आपके टिकट जो है बुक कर सकते हो. सो इट विल सेव योर टाइम आल्सो ऑब्वियसली. ई टिकट्स cut on manual time, the need for middleman, the best price, the best route, availability, as all these are made available by the website offering the e-ticketing system. Okay, so it is easier. It is easier to use, and obviously it is at the best price, the best route availability, as all these are made available by the website offering the e-ticketing system.
So friends, so in today's lecture we have seen what is the e-ticketing and what are the advantages of the e-ticketing, how to actually book the e-ticket, हम लोगों ने इसका कुछ steps देखे. So in this chapter we have seen some of the points like online transactions, e-shopping कैसे करते हैं and e-ticketing कैसे होता है. So the book which I refer for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora for class 10, code 402 under NSP. So what we have studied in today's lecture and a previous lecture, that is introduction to the online transaction. What is online transaction? What is e-shopping? What is e-ticketing and advantages of e-ticketing? So now let us start with today's quiz session. So friends, let us start with today's quiz session. So you will be having total 20 questions and each question will be having 1 minute. So let's get started with that. So here is question number 1. What is long form of LAN? Options are A. Local area network, B. Local allocated network, C. Light area network, and D. Locally allocated network. Your time starts now. So the correct option is A. Local area network is the long form of LAN. The next question number 2 is here on your screen. What is long form of MAN? M-A-N. Options are A. Metropolitan area network, B. Major allocated network, C. Multiple area network, and mainly allocated network. Your time starts now. Time up. So correct answer is A. Metropolitan area network is the long form of MAN. So the next question is here on your screen. What is long form of WAN? Your options are A. Wired area network, B. Wide allocated network, C. Wide area network, and D. Widely allocated network. So your time starts now.
time up. So correct option is C. Wide area network is the long form of WAN. So the question number 4 is here on your screen. Which of the following is not an example of instant messaging? Your options are A. Google Talk, B. Google Hangouts, C. WordPress, and D. Facebook Messenger. So your time starts now. Time up. So correct answer is C. WordPress is not an example of instant message. Google Talk, Google Hangouts और Facebook Messenger जो ये सारे instant messaging के examples हैं. Then the question number 5 is here on your screen. Which is used for sending text messages online? Your options are A. Instant messaging, B. Email, C. Website, and D. Blog. Your time starts now. So the correct option is instant messaging is used for sending text messages online. Correct option is A. Instant messaging. The question number 6 is here on your screen. We can do chatting on an IM client. True or false? Your time starts now. Yes, it is obviously true that we can do chatting on an instant messaging client. So correct option is A, true. So we will move towards the question number 7. Networks are useful because A. No one copy your files, B.
you only need one printer per network. C, the computer use less electricity. And D, each user of the network can access files more easily. So your time starts now. So correct answer is D. Each user of the network can access files more easily. That's why networks are useful. Then question number 8 is here on your screen. Internet may be termed as an example of options are A, LAN, B, MAN, C, WAN, and D, all of these. So your time starts now. Yes, internet may be termed as an example of LAN, MAN, and WAN. So correct option is D. All of the above can be considered as the example of internet. Then the question number 9 is here on your screen. The act of writing a post for a blog is called A, blogger, B, blog, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now. So the correct answer is C, blogging. Yes, act of writing post for a blog is called as the blogging. So the question number 10 is here on your screen. A person who writes a blog is called A, blog, B, blogger, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now.
A person who writes a blog is called as the blogger. So correct option is B, blogger. Question number 11 is here on your screen. Out of the following, which is not the blogging site? A, my blog, B, blogger, C, WordPress, and D, live journal. So your time starts now. So time up. Correct answer is A, my blog is not a blogging site. So question number 12 is here on your screen. Which of the following are Government of India's startup initiatives? Your options are A, Startup India, B, Make in India, C, both A and B, and D, none of the above. So your time starts now. So the correct option is both A and B. Yes, Startup India and Making India. Both are the Government of India's startup initiatives. So the question number 13 is here on your screen. Successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So options are A, true, B, false. Your time starts now. So, yes, it is true that the successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So, correct option is A, true. Now, we will move towards the question number 14. Entrepreneurship degrades the standard of living. True or false? So, your time starts now.
time up. It is obviously not true that entrepreneurship degrades the standards of living. So correct answer is B, false. So let us move towards the question number 15. Which of the following is not developed by entrepreneurships? A. Society, B. Economy, C. Nation, and D. None of the above. So your time starts now. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सोसाइटी, इकोनॉमी और नेशन तीनों को भी डेवलप करता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप? सो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव. So the question number 16 is here on your screen. Which of the following is an example of online transaction? A. E-shopping, B. E-ticketing, C. Both A and B, and D. None of the above. Your time starts now. So both e-shopping and e-ticketing are options of examples of the online transaction. So correct answer is C. Both A and B are the example of online transactions. So we will move towards the question number 17. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with A. FTP, B. HTTP, C. HTTPS, and D. Any of these. So your time starts now. So time up.
for entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with HTTPS, that is Secure Hypertext Transfer Protocol. तो देखिए पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, सो उसकी सिक्योरिटी जरूरी होती है, सो दैट्स वाई सिक्योर HTTP यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. The question number 18 is here on your screen. Which of the following OS does not come under Linux OS? That is A. BSD, B. Red Hat, C. Ubuntu, and D. CentOS. So your time starts now. So BSD is the OS, that is operating system, which does not come under Linux OS. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए रेड हैट उबंटू एंड सेंटोस जो है ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं, whereas BSD does not come under it. So correct answer is A, BSD. So the question number 19 is here on your screen. How many sustainable development goals target are there? Options are A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 169 sustainable development goals targets are there. So the last question number 20 is here on your screen. How many sustainable development goals are there? A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 17 sustainable development goals. So correct option is D 17. That is 1 cell. So that's all for today's session, friends.
So the next feature for the Plus and Iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for Plus and Iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's start it. So friends, Unacademy is freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is the exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners, and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer, and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer. देखिए दोस्तों, अनअकैडमी हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करती है. सो इस बार जी हाँ, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, you are having the last chance to win free Creative Corner subscription. So this offer is going to end on 23rd of the August 2021. जी हाँ, हमारी क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन की जो चांस है, इट इज गोइंग टू एंड. सो देखिए ऑफर्स कैसे हैं. देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, लाइक अगर आपका सब्सक्रिप्शन 12, 15 एंड 18 मंथ्स का है क्रिएटिव कॉर्नर का, then you will get that is a free Creative Corner subscription for 2 months. So whether it is Plus or Iconic based on your subscription. Then अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है 24, 36 and 48 months का, so you will get the free Creative Corner subscription for 4 months. जी हाँ, 4 महीनों के लिए आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. सो ये अगर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्लस का मिलेगा, अगर आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो आपका क्रिएटिव कॉर्नर का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज दी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है फॉर 60, 72 एंड 84 मंथ्स का, इधर फॉर द प्लस और इधर फॉर द आइकॉनिक. सो आपको क्या रहेगा, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए. इट इज टोटली फ्री. प्लस का है तो प्लस का मिलेगा, आइकॉनिक का है तो आपको आइकॉनिक का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है टोटली फ्री मिलेगा. सो हरी अप, इट इज लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर एंड यू कैन यूज माय कोड that is given here, that is TD Live, to get the free subscription also for the Creative Corner. So this is your last chance to win free Creative Corner subscription, and the offer is going to end on 23rd of the August 2021. So choice is yours. So with Unacademy subscription, you will get with one subscription comes the great benefits like you will get the unlimited access to 7 subjects. 7 सब्जेक्ट्स को आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, एंड यू विल गेट द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टू चूज फ्रॉम. ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस मिलेगा. यू विल गेट द फुल सिलेबस फॉर NCERT and as well as dedicated plus courses.
And yes, obviously without Unacademy subscription, you will be having the lot of confusion. So jaldi कीजिए students, choice is after all yours. So subscribe now before it is too late. So the next exams are, I think, just 2 months, right? So you can get the 10% discount on using the educator referral code. So please use my educator referral code, that is TDLove, so to get the 10% discount. So jaldi कीजिए, hurry up, the time is getting over. So friends, we are having the mega launch every Mondays, as you know. So here we are having the Laksh Foundation batch for IIT and JEE aspirants. So ये बैच किसी लिए है, देखिए फॉर सीबीएसई क्लास 9 के लिए भी है एंड सीबीएसई क्लास 10 के लिए एंड यस पहले हम लोग देखते हैं सीबीएसई क्लास 9 के लिए. इट इज गोइंग टू स्टार्ट on the 31st of the August 2021. 31st August को बैच स्टार्ट होगी and we are having the subjects like maths and science with the expert teachers. Yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing and NCERT exercises also. And also अगर आप लोग IIT JEE के aspirants हो for CBSE class 10th, so यहाँ पर भी आपकी जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है वो 31st August 2021 को स्टार्ट हो रही है. सो वी आर हैविंग द स्पेशल स्ट्रेचेस फॉर द मैथ्स एज वेल एज द साइंस. तो देखिए मैथ्स की जो डेट है वो 1 सितंबर को स्टार्ट होती है एंड साइंस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 31st of August 2021. सो वैसे ही सीबीएसई क्लास 10 के लिए IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए एक और सीबीएसई क्लास 10 की बैच रहेगी, दैट इज लक्स फाउंडेशन बैच. It is for maths, it is going to start on 17th of September 2021, and for science it is going to start on 31st of August 2021. So yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing sessions and NCERT exercises. So students जो obviously class 9th and 10th के IIT and JEE के लिए interested हैं, they are having the golden chance for it. And yes, you can use my code, that is TDLive, for flat 10% off discount. So that is बात की students, join our new Laksh Foundation batches. So friends, let me tell you about the basic plan about the plus subscription and also the advanced plan of the basic. That is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started. And yes, obviously at iconic you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए प्लस के फीचर्स क्या क्या है. यू आर हैविंग द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स एज वेल एज द इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs also. So यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव इंटरेक्शन विथ योर मेंटर्स ऑल्सो, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, दैट इज टीचर पेरेंट कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज TDLive, फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solution. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month subscription, then you have to pay 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription, then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription, then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription, then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months, then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month.
Now, if you are going for the 24-month subscription, then you will have to pay 25,000 for the 24 months. That is 1,042 per month. If you are going for 36 months, then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. इफ यू आर गोइंग फॉर द 48 मंथ सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा एंड 830 विल बी फॉर पर मंथ। देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। सो बेसिक क्लास का 9, 10, 11, 12 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए, द सेम केस फॉर 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 एंड 40 मंथ्स। देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा विथ 4,000 पर मंथ। देन नेक्स्ट वन इज 6 months, 17,000 रहेगा विथ 2,833 पर मंथ। देन 12 months का रहेगा 28,000। देन 15 months का रहेगा 32,000। 18 months का रहेगा 35,000। 24 months का रहेगा 48,000। 36 months का रहेगा 66,000 एंड 48 months का रहेगा 83,000। दैट इज 1,729 पर मंथ। सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए। 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए। 6 month का रहेगा 3,000 के लिए। 12 months का रहेगा 15,000 के लिए। 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए। देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए। एंड लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा। And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000, then 6 months का 17,000, 12 months का 28,000, 15 months का 32,000, that is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए। ऑब्वियसली वैसे क्या रहेगा 36 months का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, that is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So student, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन that is based on your choice, that is plus or iconic, प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अनअकैडमी मेगा कॉम्बैक ला रही है। जी हाँ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप ट्रस्ट वंस अगेन, अनअकैडमी मेगा कॉम्बैक। सो इस बार you can win the scholarship worth rupees 2 crore. So link is given in the description box. So obviously this Unacademy Mega Compact is on every Sunday and you can use my code, that is TDLive, for the educator referral bonus. So देखिए Unacademy Mega Compact बहुत से आप स्टूडेंट्स ने दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे। So let me tell you about that. So Unacademy Mega Compact Scholarship Test, that is formula for your success in CBSE classes 9 and 10. You can win one scholarship worth rupees 2 crore. देखिए लास्ट टाइम हम लोग जो लिए थे बैचेस उसके 1 करोड़ के थे। सो नाउ वी आर हैविंग द 2 करोड़ स्कॉलरशिप ऑफर। सो आपकी पढ़ाई के साथ साथ यू कैन विन द प्राइजेस आल्सो। एंड दिस मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आर फॉर सीबीएसई क्लासेस 9th and class 10. सो डेट लिख लीजिए, द अपकमिंग मेगा कॉम्बैक्ट इज ऑन August 29th, 2021 at 11 AM. सो एनरोल ऑनलाइन, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम लोग पहले से ही। सो उसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा। यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस एंड 45 minutes फॉर दैट। These questions and you are having the 45 minutes to solve this. The test will be obviously available in Hindi as well as English language. Both languages में आपको टेस्ट अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। And test will be live. It will be the free live test on your Android application. So जल्दी कीजिए and enroll now for Unacademy Mega Compact. डेट लिख लीजिए August 29 at 11 AM. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TD Live, for both Plus and Iconic subscription with flat 10% off. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also.
try its all of the features for free using my code, that is TNIL. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. An Academy, let's crack it.